प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? In an isolated system of interacting particles, the total linear momentum of the system remains conserved. आइए इसको प्रूव करते हैं. Consider a system of n particles of masses m1, m2 and so on mn. Let r1 vector, r2 vector and so on rn vector are the position vectors of m1, m2 and so on mn respectively. मीन्स r1 जो है वो पोजीशन वेक्टर है m1 का, r2 पोजीशन वेक्टर है m2 का और इस तरह से rn पोजीशन वेक्टर है mn का. Let r vector is the position vector of center of mass. सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था. वी नो दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस सो ऑन mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn. R vector equal to divided by m1 plus m2 plus 1 mn की जगह हम लिख लेते हैं m और m क्या है? Equal to m1 plus m2 plus 1 mn is the total mass of the system. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. m इंटू आर वेक्टर और अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. Differentiating both sides with respect to time t. M constant dr by dt equal to m1 into dr1 by dt plus m2 into dr2 by dt plus so on mn into drn vector by dt. m into rate of change of position vector क्या होता है? velocity. m into v vector. v vector को लिख लें. This is the velocity of center of mass of the system equal to m1 into ये हो जाएगी velocity of particle of mass m1. इधर साइड में बता दें. प्लस m2 into
v2 vector, dr2 vector over dt is v2. v2 vector is the velocity of particle of mass m2 plus so on mn vn. vn is the velocity of particle of mass mn. अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं. Differentiating both sides with respect to time t. m into dv by dt equal to m1 dv1 over dt plus m2 into dv2 over dt plus so on mn dvn over dt. अब इसको हम लिख लेते हैं d by dt ऑफ m को अंदर लिख लेते हैं. डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इस तरह से लिख सकते हैं. इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन a1. a1 is acceleration produced in particle of mass m1 plus m2 into a2. a2 बता दें acceleration produced in particle of mass m2 plus so on mn an. an is acceleration produced in particle of mass mn. d by dt of mv vector equal to mass into acceleration according to Newton's second law of motion is external force acting on the particle. F1. F1 is external force acting on particle of mass m1 plus इसको लिख लें F2. F2 is external force acting on particle of mass m2 plus so on Fn. Fn is external force acting on particle of mass mn. This is total external force और हम इसको लिख लेते हैं total external force acting on the system. Because the system is isolated, therefore total external force acting on the system is 0. That is the vector sum of all the forces, all the external forces acting on the system is 0 for an isolated system. Now because this is equal to 0, यहाँ substitute कर दें. Therefore d by dt of m into v vector equal to 0. इसकी जगह 0 substitute कर दिया. अब किस क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है. d by dt ऑफ कांस्टेंट इज 0. क्यों 0? डेरिवेटिव होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ c और रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज 0. अब जब क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों को कंपेयर कर लें. mv मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट.
अब mv कांस्टेंट का मतलब mv किसके बराबर है, इसके बराबर है, therefore m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus so on mn vn vector equal to constant. So for an isolated system of interacting particles, the total linear momentum remains conserved. एक चीज और है, हमने अभी प्रूव किया कि m into v vector is equal to constant. अब m is already constant, therefore v is equal to constant. It means that if no external force acts on the system, the center of mass of the system moves with constant velocity along a straight line. तो हमने आइसोलेटेड सिस्टम के लिए दो चीजें प्रूव की, एक तो टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड द सेकेंड इज द सेंटर ऑफ मास of the system moves with constant velocity along a straight line. Thank you.